Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we were doing unit number 2. Okay, the topic that we did in the last session was rocks and metals. So this was the topic that we have done in the previous session. So today I'm here with you all to start with the next topic of the same the next topic of the same unit number 2, that is starry sky. Okay, so this is the next topic that I'm going to start in today's session. So all of you open your books at page number 68, that is starry sky. Okay, so as the name itself suggesting that we are going to talk in this topic, we are going to talk about the sky. इसका नाम देखिए खुद ही बताता है कि that we are going to talk about the sky, starry sky. So sky doesn't means the only जो आसमान हम देखते हैं. So above the sky, okay, that we call the space. तो इसमें हम अलग-अलग planets, we will talk about the planets, the stars, the gases, okay, the various heavenly bodies that are present in our space. Okay, तो बहुत सारे stars हैं, हमें planets हैं, okay, बहुत ही heavenly bodies हैं जो कि हमारे space में present है. So we all are going to talk about it. Okay, so here the heading that is given: interested in stars and heavenly bodies, read these facts about the stars. तो कहते हैं if you are interested, कुछ लोग होते हैं they love to hear about, they love to get knowledge about, मतलब they are very interested in getting knowledge about the star and the sky and the space. Okay, so if you are one of them, you are definitely going to like this chapter. So all of you open your books at page number 68, and first of all, just write down the today's date, that is 7th May 2021. Okay, chaliye. So here I'm going to start with the first one. Guess what is the brightest star in the sky that can be seen from the earth? It is the sun. It looks very big because it is nearest star to the earth. Okay. So कहते हैं कि just guess. So they are telling us just guess which is the brightest star in the sky. तो जो sky है उसमें सबसे चमकीला star कौन सा है that you can see from your that you can even see from the earth. So which is the brightest star in the sky that you can see with your from with so sorry they that you can see from the earth as well. Okay, so सबसे चमकीला तारा कौन सा है? That is the sun. देखिए sun is also, आप कहोगे मैम sun is different, stars are different. So no बेटा, the sun is also considered as a star, and it is the brightest star in the space. It looks very big because of its nearest star to the sun. Okay, so nearest star to the earth. Okay, ये हमें इतना बड़ा क्यों नजर आता है? Because क्योंकि ये सबसे अर्थ के पास जो सबसे पास में स्टार है, that is the sun, and it is the brightest star in our solar system. Okay, so the brightest star in the solar system is the sun. Okay, and you can see the sun from the earth only also. Okay, आप देखते हो दिन में जब सूरज निकलता है, आपको सूरज दिखता है, सबको दिखता है. Okay, और ये हमें देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है. ओके, अब रीजन क्या है? देखिए कोई भी चीज जितनी पास होगी हमें उतनी बड़ी नजर आती है, और जो भी चीज हमें जितनी दूर होती है उतनी ही छोटी नजर आती है. ओके, आपने देखा अगर आपकी जैसे किस बिल्डिंग के पास पहुंचते तो वो बहुत बड़ी नजर आती है, जब आप उसको दूर से देखते हो आपको छोटी सी नजर आती है. वैसे ही बेटा व्हेन वी एज जो अर्थ है वो हमारी सन के बहुत करीब है, इसलिए दैट लुक्स लाइक दैट इज लुक्स वेरी बिग फ्रॉम द अर्थ. Okay, and it is also the nearest star to the earth. The sun है, that is also the nearest star to the earth. Okay, so this is sun, sun, sun. So here a warning that is given by this caterpillar. Warning: never look at the sun directly, it can harm your eyes. तो कहते हैं सूरज की तरफ कभी भी directly नहीं देखना चाहिए. Okay, if you want to look at the sun,
You can wear shades or you can wear glasses. Okay, glasses पहन के, shades पहन के, चश्मा पहन के देखना चाहिए. Otherwise it will it will cause harm to your eyes if you look directly towards the sun. Okay, so this was sun. Sun is the nearest star to the earth. Okay, it is the very closest to the earth, so that's why it appears very big. And it is and sun, the most important thing about the sun is that it is the brightest star in our solar system. Clear? Moving next to the second one, that is Mercury. So now we will talk about the Mercury. Mercury is the smallest and the closest planet to the sun. It takes only 116 days to go around the sun. So now we will talk about a planet that is present in our solar system. Okay, अब हम अपने planets की बात करेंगे इस planet की, that is Mercury. So let's talk about Mercury. So Mercury is the smallest and the closest planet to the sun. जो Mercury है बेटा वो sun के सबसे पास वाला planet. So Mercury is the smallest and the closest planet to the sun. So मरकरी हमारे जो जितने भी 8 planets है, you know there are 8 planets in our solar system. Earlier it was 9 planets. Okay, पहले 9 planets थे, but later on जो Pluto है that is considered as a star now. Pluto को star बोला जाता है. Okay, so that's why there remain only 8 planets now. So earlier it was 9 and the Pluto was now after revision or revised version, the Pluto है that is considered as a star, and we are having only 8 planets in our सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 8 planets ही हैं. Okay, now here this is Mercury is the smallest and the closest planet to the sun. Mercury is the smallest planet in our solar system. तो जो हमारा सोलर सिस्टम है बेटा उसमें मरकरी हमारा सबसे छोटा planet है. So in the 8 planets Mercury is the smallest planet in our solar system, and it is also the closest planet to the sun. Mercury is also very closest planet to the sun, so that must be hot as well. It takes only 16 days to go around the sun. Okay, so when the Mercury moves around the sun, जो Mercury planet है जब वो sun के इर्द गिर्द घूमता है तो it just takes only 116 days. So it takes him it to only 116 days to go around the sun. तो sun के इर्द गिर्द घूमने में उसको सिर्फ 116 days लगते हैं. So जिसकी बजाय जो अर्थ है it takes near about 365 days to take a round, whereas जो अर्थ है उसको राउंड लेने में सन का it takes near about 365 days, whereas the Mercury takes only 116 days to go around the sun. So this is Mercury. Okay, so Mercury is the smallest planet in our solar system, is also the closest planet to the sun, and it just take only 116 days to go around the sun. Okay, so सबसे पहले था sun. Sun is the brightest star. Mercury is the closest star to the sun and smallest planet in our solar system. Okay, now we will move to the next one. This is now we will talk about another heavenly body in our solar system, that is galaxy. Okay, so next heavenly body in our solar system is galaxy. So let's read out about the galaxy first. Millions of stars together form a galaxy. The Earth and the Sun belong to the Milky Way galaxy. Okay, जब बहुत करोड़ों जो सितारे हैं, stars हैं, when they come together, जब वो इकट्ठे मिल जाते हैं, तो they form a galaxy. तो वे galaxy बनाते हैं. So Earth and the Sun belongs to the Milky Way galaxy. Okay, जो Earth है और जो Sun है हमारा, वो कौन सी galaxy को belong करता है? So we belong to Milky Way, जिसको कि हिंदी में आकाश गंगा बोला जाता है. So Earth and the Earth and the Sun belongs to the Milky Way galaxy. So how galaxies form? So when millions of stars, जब जितने भी stars हैं, millions of आपको पता है मतलब करोड़ों में stars हैं, there are lots of stars that are present in the space. Okay, जब कुछ stars आपस में मिलके okay मिलते हैं तो वो एक गैलेक्सी फॉर्म कर देते हैं. जैसे कि लगता है कि दैट
एक आकाश गंगा लाइक, जैसे मतलब आकाश गंगा का मतलब जब बहुत सारे स्टार्स इकट्ठे मिलके तो ऐसा लगता है कि एकदम जैसे कि नदी बह रही है। ओके, सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है कि जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती है हम कहते हैं ना सैलाब आ गया। सो वैसे ही इट लुक्स लाइक दैट, ये जो सितारों का एक सैलाब सा आ गया, एंड दैट्स नोन एज गैलेक्सी। तो जो हमारी अर्थ है और जो सन है, दे द अर्थ एंड द सन दे बिलोंग टू द मिल्की वे गैलेक्सी। सो द हिंदी नेम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज आकाश गंगा। Okay, so basically the question, suppose the question is what is galaxy. So you will write down billions of stars. When millions of stars together come together, they form a galaxy. When millions of stars come together, they form a galaxy. Okay, chaliye, moving next to the fourth one. So now we will talk about the stars. Okay, so let's begin with this. On a clear, dark night, the stars seem to twinkle. In fact, most of the stars are shining with a steady light. The movement of the air in the air blanket surrounding the earth causes the starlight to get slightly bent as it travels from distant star through the air. Blanket down to us on the ground. To our eyes, it makes the stars seems to twinkle. देखिए अब इसमें ये दिया है बेटा कि जो स्टार्स आप देखते हो हमें लगता है कि जब जब बहुत ही क्लियर स्काई होता है, जब मतलब स्काई इज क्लियर, आकाश में मतलब बादल नहीं होते हैं, कोई ऐसा मौसम खराब नहीं होता, तो आपको दिखते होंगे बहुत सारे तारे, दे आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। सो हाउ दे अपीयर्स टू ट्विंकल, वो कैसे लगता है कि वो चमक रहे हैं, हमें जैसे कि दिखता है कि वो चमक रहे हैं बार बार, मतलब हम लगता है जैसे लाइट जल रही है बंद हो रही है। ओके, सो मतलब स्विच ऑन एंड ऑफ हो रहा है स्टार्स का। सो व्हाई इट सीम्स लाइक दैट, वैसे हमें क्यों अपीयर होता है दैट दे आर switching on their light and switching off their light, so that is known as twinkling. We call it as twinkling on the in the sky, the stars are twinkling in the sky. So why it seems so, here it is given, on a clear dark night the star seems to twinkle, जब बिल्कुल ही क्लियर साफ रात होती है, मतलब देर इज नो clouds in the sky, so you can see millions of stars, they are shining in the sky, they are twinkling in the sky. In fact, most of the stars are shining with a steady light. The movement of the air in the air blanket surrounding the earth causes the starlight to get slightly bent as it travels from distant star through the air blanket down to us on the ground, to the ground. ओके, तो कहते हैं कि जो एयर है कि जब देखिए हमें अपीयर होता, कई बार कई स्टार होता है, ऐसा लगता है कि लगातार एक ही मतलब एक ही रोशनी से, मतलब लाइक एक ही तरह से उसमें से रोशनी आ रही लगातार, मतलब देर, तो दी व्हाई दीस अपीयर्स टू, बट व्हाई इट सीम्स टू अपीयर लाइक दे आर ट्विंकलिंग, सो द रीजन बिहाइंड इट बिकॉज ऑफ द एयर ब्लैंकेट, सो जो कि एयर हवा की एक चादर जिसको हम बोलेंगे, तो जब एयर है जो बहुत तेज ब्लो करती है, एंड व्हेन इट पासेस ऑन टू द सराउंडिंग, जब वो अर्थ की सराउंडिंग से पास ऑन करती है तो वो क्या करती है, वो स्टार की लाइट को थोड़ा सा बेंड कर देती है। ओके, ओके, जब जो कि स्टार्स की लाइट होती है वो लगातार आती रहती है। ओके, एंड जो एयर होती है उसकी वजह से कई बार क्या होता है, जो स्टार की लाइट है वो थोड़ी सी बेंड होनी, मतलब कि मतलब वो स्टार की लाइट को, जो स्टार की रोशनी को वो थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, तो हम और हमें दूर से देखने में ऐसा लगता है दैट दे आर ट्विंकलिंग। सपोज जैसे होता है ना कि अगर आपने कहीं लाइट जलाई हो, सपोज ठीक है, उसी लाइट के सामने आके आपने, सपोज आप बिल्कुल अंधेरा कमरा है, वहां सामने आपने एक वो रख दिया, एक टॉर्च रख दी, एंड सडनली कोई उसके अंदर उस टॉर्च के बिल्कुल आगे आके खड़ा हो जाए, तो आपको क्या लगेगा, वो लाइट एकदम से कम हो गई, फिर हटेगा तो फिर लगेगा फिर ज्यादा हो गई। तो अगर कोई बार बार ऐसे करेगा तो आपको लगेगा ना कि लाइट जल रही है, बंद हो रही है। ओके, सो वैसे ही व्हेन द एयर that is in the surrounding, when it passes through the star light, तो स्टार की लाइट को थोड़ा सा बेंड कर देती है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है that the star seems to be twinkle, but actually they are not twinkling, they are just they are twinkling with their steady lights, वो अपनी एक परमानेंट जो लाइट है उनकी उसी से वो चमकते रहते, वो बार बार ट्विंकल नहीं करते। ओके, तो जो एयर की जो एयर ब्लैंकेट है उसकी वजह से it appears to us that the stars are twinkling in the sky, because the air blanket it bends the starlight
and from the earth it appears to us that they are twinkling. Okay, so these are the stars. ये क्या है? These are the stars that we have talked about. चलिए, so let's move to the next page number 69 from the same topic. Okay, so the next is Proxima Centauri. So now we are talking about the Proxima Centauri. One of the stars of the triple star system, Alpha Centauri, is the closest star to the Sun at a distance of only about 4.2 light years. Okay, so here we are talking about a star. Okay, Proxima Centauri, one of the stars of the triple star system, Alpha Centauri is the closest star to the Sun. So, which is the closest star to the Sun? Okay, so देखिए Alpha Centauri, this is the name of the stars. So stars we see here in the sky. Okay, so there are different stars with different names. Okay, so Proxima Centauri and the Alpha Centauri, these both are also the name of the stars. ये भी stars के name है. So this is a star. Alpha Centauri basically is divided into three stars. और जिसमें कि जो Alpha Centauri, this is the closest star to the sun at a distance of only, okay, अभी कितना close है? So it is closest to the sun. Okay, or you can say it is मतलब कितने distance पे? So it is near about 4.2 light years from the uh, um, sun. तो sun just Alpha Centauri है, that Alpha Centauri is the name of the star which is the closest star to the sun. उसको closest क्यों बोला जाता है? Because ये sun से near about 4.2 light year ही दूर है. ओके, अभी लाइट ईयर्स वगैरह क्या होते हैं बेटा? ओके, दैट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, सो इट विल बी नॉट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. तो आप जस्ट ये मान लीजिए कि मतलब जो जो चांद, देखिए हर प्लैनेट, एवरी प्लैनेट दे हैव देयर ओन स्टार्स. हर प्लैनेट के अपने स्टार्स होते हैं. एंड दिस अल्फा सेंचुरी, दे ओके, दिस इज आल्सो अ स्टार एंड इट इज द सबसे क्लोज, दिस इज द क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट मीन सबसे पास में. So this is the closest star to the sun, okay, at a distance of 4.2 light years only. Clear? Chaliye. Next is nebula. Now what is nebula? A nebula is a huge cloud of gas and dust in space. Scientists believe that new stars form inside these nebulas. Okay, now ab nebula क्या होता है? This is the next one. Now, nebula is a huge cloud of gas and dust in the space. तो स्पेस में, आसमान में जब गैस का और डस्ट का एक बहुत बड़ा बादल बन जाता है, ओके, सो एज अ ह्यूज क्लाउड, एक बड़ा सा बादल बन जाता है जिसमें कि there are number of different gases are there and number of dust particles are there. Lots of gases, different gases and lots of dust particles are present in that. So they form a cloud. वो एक cloud की form ले लेते हैं, that is known as nebula. Okay, and scientists believe that the new stars form inside these nebula. और जो scientists हैं वो क्या believe करते हैं? उनका मानना है कि जितने भी नए तारे, नए stars जो बनते हैं वो उसी nebula से बनते हैं. So it is being believed by the scientist. Okay, so when a huge cloud of gas and the dust particles, okay, so or you can say when a different gases and the different dust particles they come in a huge cloud, एक बड़े से cloud के अंदर ही वो आ जाते हैं, that is known as nebula. Okay, and the scientists they believe that the new stars are formed with the help of the nebula only or inside the nebula only. So नए जो तारे हैं वो इस nebula के ही अंदर बनते हैं. Next is Ursa Major. So now what is Ursa Major? Ursa Major is a constellation located in the northern sky. It is the third largest constellation in the sky. Seven bright stars within Ursa Major form a shape called the Big Dipper that looks like a cup with a long handle. In India, these seven stars are imagined to be has seen wise men as Saptarishi. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्सा मेजर. देखिए अर्सा मेजर आपने सुना होगा, जिसको कि आपने सप्तऋषि नाम से सुना होगा. अगर नहीं सुना है तो आज ही रात को देखना, रात को जब अगर इफ द स्काई इज क्लीन तो यू कैन सी दिस सप्तऋषि. सो टेल योर फादर, टेल योर मदर, टेल योर एनीवन ऑफ योर एल्डर कि दे विल शो यू द सप्तऋषि इन द स्काई. ओके, नाउ व्हाट इज सप्तऋषि? इट इज द group of stars. Okay, group of stars that is known as constellation. So group of stars is known as
constellation. So Ursa Major is a constellation located in the northern sky. It is the third largest constellation in the sky. ओके और ये तीसरा सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन है स्टार्स का. दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन ऑफ द कॉन्स्टिलेशन इन द स्टार्स. ओके तो इसमें क्या है, अर्सा मेजर में क्या है बेटा, इन दिस अर्सा मेजर 7 ब्राइट स्टार्स, सो 7 बड़े बड़े ब्राइट स्टार्स, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ शेप कॉल्ड द बिग डिपर. ओके जब ये सारों के सातों स्टार्स इकट्ठे आते हैं तो माना जाता है कि मतलब ये एक बहुत बड़ी बिग डिपर. डिपर किसी चीज को जो निकालने के लिए हम यूज करते हैं, डिप करके हम सपोज तेल निकालते हैं तो यूज द डिपर फॉर इट. ओके सो ये जो स्टार्स है इनकी ये ऐसे लगते हैं, मतलब इनकी शेप ऐसी है जैसे इट फॉर्म्स अ शेप ऑफ अ बिग डिपर. ओके ओके एंड बिग डिपर विद अ कप with a long handle. So this looks like a cup with a long handle. In India, these 7 stars are imagined to be 7 wise men. और इंडिया में, भारत में इन 7 स्टार्स को सप्तऋषि भी बोला जाता है, which means 7 wise men. Okay, this is known as Saptarishi in India, whereas in other countries it is known as Ursa Major. Clear? So this was from the page number 69. So now we will move to the quick quiz that is given here. Okay, so quick quiz. The first question is, what do we call a dying star? Okay, जो एक मरता हुआ तारा है, जैसे हम जिसको हम बोलेंगे टूटता हुआ तारा. So what we call a dying star? So a dying star is known as supernova. A dying star is known as supernova. S-U-P-E-R, supernova. N-O-V-A-R, that is nova. A dying star is called supernova. Clear? Moving next to the second one. The position of which star is used to find direction? Okay, so कौन से star की position से you can find the direction? So that is North Star. Okay, so North Star is used for finding the direction. Suppose somebody lost in a some place, कोई जगह पे गुम जाता है, that person is not able to identify the directions where it's south, north, east, west किस side है. So at that time you can watch this North Star. North Star means ये जो ध्रुव तारा जो होता है ये हमेशा नॉर्थ की साइड ही होता है. ओके सो जिस भी साइड ये तारा होगा दैट मीन्स दैट वे दैट इज नॉर्थ. ओके सो इसलिए इसको पोजीशन ढूंढने के लिए भी, फाइंडिंग डायरेक्शन ढूंढने के लिए भी दिस स्टार इज बीइंग कंसीडर्ड. सो द पोजीशन ऑफ दिस स्टार इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ स्टार. क्लियर? चलिए, moving next to the third one. Which heavenly body in the sky produce their own light? ओके स्काई में ऐसी कौन सी हेवनली बॉडी है जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करती है? सो दैट इज स्टार्स. तो स्टार्स दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. ओके देखिए सन, जो मून है, दे गेट द इट्स लाइट फ्रॉम द सन. जो मून को जो उसकी रोशनी मिलती है, इट गेट इट फ्रॉम द सन. बट द स्टार्स दे गेट देयर ओन लाइट, दे हैव देयर ओन लाइट. जो स्टार्स है उनकी खुद की लाइट होती है. So this is a heavenly body that's in the sky that produces their own light. Clear? Which is the hottest planet of our solar system? Which is the hottest planet of our solar system? That is Venus. So Venus is the hottest planet in our solar system. तो हमारे solar system में जहाँ पे 8 planets है, उस 8 planets में सबसे गर्म planet कौन सा है? That is Venus. So Venus is the hottest planet in our solar system. So Venus is the hottest planet in our solar system. Moving next to the fifth one. What is the name given to the blanket of air covering the earth? Okay. So हम जो कि अर्थ की जो ब्लैंकेट है, ओके व्हाट इज द नेम गिवन टू द ब्लैंकेट ऑफ एयर कवरिंग द अर्थ? सो अर्थ को कवर करने वाली जो एयर की जो हवा की एक चादर जिसको हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं, इट इज बट एक्चुअली इट इज एटमॉस्फेयर. सो द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर्स द अर्थ, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. ATMOSPHERE, that is atmosphere. So the blanket of air that covers the earth is known as atmosphere. Spelling is ATMOS. तो जो हवा की एक चादर है जो कि हमारी पूरी अर्थ को कवर करती है, that is known as atmosphere. Clear?
So this was from page number 68 and 69, that is Starry Sky. Okay, so now we will move to the next topic as well. Chaliye, so let's say the next is that is sources of energy, which is given at page number 70. So let's move to the next topic, that is sources of energy, given at page number 70. Sources of energy. Okay. देखिए अभी इस बुक चैप्टर में क्या है बेटा, इन दिस चैप्टर, दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग इट. Okay, so this in this chapter the pictures are given here and you need to identify the sources of energy. कहाँ से जो ये pictures हैं जो इनको अपनी जो energy की source है, where they get it from, or from where they get their source of energy. So the first is, can you name the source of energy? Here, the question number one, it is given. Can you name the source of energy that is being used in each of these pictures? You can choose the words from the help box given below. Okay. So the first picture you can see some cylinders are put in a car. So this car, जो car है इसका source of energy क्या है? That is CNG. CNG is compressed natural gas. Okay. So the answer for the first one is CNG. CNG देखिए जो गैस है, नेचुरल गैस है, इसको यूज किया जाता है for running the vehicles as well. So this is CNG. The full form of CNG is compressed natural gas. You can simply write CNG also, that I have written here. Okay. Second. So in the second you can see the picture of solar panels are here. So how these solar panels get their energy? These solar panels are better, they get their energy from the sun. Okay, so the answer for the second one is sun. Okay, the sun है, सूरज की रोशनी जब इन solar panels पे पड़ती है, so they observe the heat of the sun and store it to a battery that is attached to it, and later on they use this energy for lighting the lights. So the second is solar panels are here and solar panels get their energy from sun. Third, in the third picture you can see uh, there are poles, electricity poles are here, big electricity poles are here. So how these poles they get their energy? तो जो ये poles हैं, electricity poles हैं, ये अपनी source of energy इनको कहाँ से मिलती है? So that they get from the electricity. Okay, the poles they get their source of energy from the electricity. तो बिजली से ही, बिजली के जब खंबे हैं उनकी एनर्जी वहीं से मिल जाती है, electricity. ELECTRICITY, that is electricity. Fourth, in the fourth picture you can see the big wind mills are there. So you can see windmills are there. अब ये windmills है, ये चलती कैसे हैं? Okay, so when the air flows or the wind flows, these windmills they get their they can move their turbines. Okay, जब हवा चलेगी तो तभी ये जो turbines है move करेंगी. So that means these windmills they get their source of energy is wind. WIND, wind. Okay, moving next to the fifth one. Okay, so in the fifth you can see a jet plane is there. तो जेट प्लेन कैसे उड़ान भरेगा? उसके अंदर जब फ्यूल भरा जाएगा तो ओनली देन इट कैन टेक ऑफ. तो जेट प्लेन get its energy from fuel or jet fuel. You can write jet fuel as well. Okay, moving to the sixth one. So sixth picture you can see a dam is here. This is a dam. Okay, so एक dam है. Okay, how does a dam gets its source of energy? So the source of energy for a dam is water. जब तक डैम में पानी नहीं होगा, how can they move the turbines that are attached to it? So the source of energy for a dam is water. The spelling of water is WATER, that is water. Moving next to the seventh one. Okay, so in the seventh picture you can see a burning coal and wood, जिसको हम अंगीठी बोलते हैं.
तो इनकी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? दैट इज वुड एंड कोल, लकड़ी और कोयला. सो लकड़ी एंड कोयला इज द सोर्स ऑफ energy. Okay, so these are the pictures of various energy sources. Okay, sorry, not the energy sources. So in this we have written the name of the various energies from where all these things get their energy, so that they can move, they can perform. Okay, so this was our today's session, class. So with this I'm just ending the today's session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody have a great day.